Hi.
Evening, everyone. Okay, tell me, where did we stop in the last class? Okay, this is ACSC दे दिया CBSE second one is so we completed gravitation, pressure and all everything. Anybody has any doubts from the questions attempted by yourself? Thank you. Did anybody think over this question? There was one thing which was dicey. The second option is the greatest of liquid in air. What is greatest of liquid in air? Just continue. Page 141. Second part, second part. नहीं समझ आया maybe lowest होना चाहिए density is lowest over वो हो सकता है लेकिन greatest तो कुछ है नहीं इसके अंदर how density is less कैसे greatest होगा इसमें greatest कुछ नहीं है वही हो so there may be some mistake or ठीक है let's start work and energy unless you have any question I'll go with the next chapter
So how do we define work? So when we say work, we are going to talk about physical work. Or mechanical work. Okay. So in science, like if you're sitting and studying, sitting at a place and studying, are you doing any work? Yes, of course. Yes, sir. You're doing work, right? But as per science, you're not doing any work. It is not a mechanical work, it's a mental work. Mental. So, how do we define work in physics? In physics, it's said to be done when this is chapter 10. What is the page? 45. Yes. Well, you're smart, I thought. You can sense the name of the chapter. Okay, you are smart. In physics, work is said to be done when force applied on a body. Displacement. Or displaces it. In physics, work is said to be done when force applied on a body displaces. The work done by the force is given as F into how work done is given. Work done by the force is given as product of force and the displacement. Okay. So suppose you have an object here and some force F is applied on it. And this object moves by displacement S. Then the work done in moving the object from position A to position B. This is how work is defined. Force into displacement. So what is the unit? What is the unit of work? Is unit of force into unit of displacement. Is Newton meter or Joule. We don't write it as Newton meter because work done is scalar quantity. Is scalar quantity. Okay. And Newton meter is actually
There is another physical quantity called torque. Have you heard of torque? So torque is needed to produce rotational motion. Here, force is needed to produce translational motion, right? But if I'm rotating, so for this, is this translational motion? Is the body leaving its position? No, it is rotating about this axis. So this kind of a thing is called torque, like opening the cap of the bottle. It is not linear force. That is called torque. So that unit is called Newton meter. Okay. Again, work done के लिए unit क्या लिखेंगे? Joule. Joule is also unit of energy. Joule is also unit of energy, and this chapter is work and energy. Can you do work if you don't have energy? No. So whenever you are working, what is lost? Energy is lost, or energy is consumed. That's why the amount of work done is equal to the amount of energy lost. That's why work and energy are measured by same unit. Is that clear? We will see. Formula will be slightly different. Okay. So how much energy is lost? Okay. For that, you can find out how much work is done. Okay. So we'll discuss about energy. What is the definition of work here? Now, here the force is moving the body in the same straight line. Then the formula is F into S. Now, what if the force and the displacement are in different directions? This can happen. Like, for example, very common example is when you're pulling the suitcase with a wheel, right? So when you're holding it and when you're pulling like this, so where is the direction of force? This. What is the direction of displacement? Like this. So there is an angle theta. Okay. In this case, force and displacement are not in the same direction. Correct? Yes, sir. In this case, the formula for work done is given as cos theta. Understood? Whenever there is an angle between force and displacement, then the work done is given as Fs cos theta. Now you will understand what is cos theta when you learn about trigonometry. Is it introduced to you? Yes. So many situations, the force and displacement are not in the same direction. There is some angle between them. So then the formula is given like this. So it is given in a volume, but it is not in your textbook. The cost is like base upon the hypothesis, right? Yes. And sin theta is? I needed opposite upon hypothesis. Yes. So these are nothing but ratios of the side of right angle triangle. You'll learn about it. So if you're interested, I will just give you. Basically, little bit of trigonometry for you. It's for the direction of the motion, the force. It's for the direction of the vector. For the direction of the. Wait. Let me first tell what is sine cos tan. Okay. So basically, it is the property of ratio of sides of right angle triangle. First of all, you should know this. So we define the ratio. What are the ratios? So look at this. This theta
Okay, the side opposite to the angle is AB. Opposite side to the angle is it's called opposite side. And what is BC? It is called base. What is this called? Hypotenuse. First of all, you should know the names of the sides. Right? Side opposite to the angle is called opposite side. Side adjacent to the angle is called base. And the slant is hypotenuse. Okay. So if this angle was here, then opposite becomes this. You need to be careful. Opposite side is always the side opposite to the angle. 90 is obvious. So it could be either this angle or this angle. So any angle. Understood? Now, so how do we define sine of theta? Theta is the angle. Sine of theta is defined as opposite upon hypotenuse. So in this case, it is AB by AC. Okay. Cos of theta is defined as base upon hypotenuse. Okay. And tan theta is defined as opposite upon base. Opposite upon base. Basically, sine cos theta upon cos theta. Yes. So this is what? AB upon BC. You can see that if you divide sine theta by cos theta, this will also result into AB by BC. AC will get cancelled. Okay. This is also equal to. Okay. So there are some standard values of sine theta and cos theta that you must know. Okay. So how to know this? I'll just give you the values of sine theta and cos theta for some angle. So let us say theta value 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. So sine of theta. So you must remember only one row. Yes. What is sine of theta? Sine 0. When theta is 0 degree, then it is 0. The value of sine 0 is 0. Sine 30 is 1 by 2. Sine 45 is 1 by root 2. Sine 60 is root 3 by 2. Sine 90 is 1. Understood? ये values है. When you will study about trigonometry, maths में तुमको और detail में बताएंगे. How to get these values? They will tell you. Right now I'm just giving you the values. बस ये याद रखना है. 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, and 1. And standard angle 0, 30, 45, 60, 90. तो याद रहेगा. Cos में उल्टा हो जाएगा. अब ऐसे इसको उल्टा लिख दो 1 से लेके this is 1 ठीक है. Now divide sin theta by cos theta तो तुमको क्या मिल जाएगा tan theta. So 0 by 1 is 0. This will be 1 by root 3. ये हो जाएगा 1. ये क्या हो जाएगा root 3. और ये क्या होगा? Division by 0 is
Infinity. Sir, yeah, undefined. Undefined is infinity. You cannot define infinity. Sir, very small. What is very small? Sir. So ask him. Ask him or ask me. कौन से टाइम में पैदा हुआ भाई? कौन से टाइम में पैदा हुआ? Today, if you want, you can make solution, right? Very small. You ask me, what do you want? Where are you struggling? Tell me. Done. Sure. Okay. Help is just a call away. Okay. Yes. I know this also, this is visible. If this is visible, that is greater than this. Okay, I'll try to write bigger. Sir, he didn't wrote that. He didn't write that. You have to, ये नहीं लिखेगा तो फिर वो कैसे पता चलेगा भाई? Yeah, copy, but copy in the right sequence. Listen, first you have to write, this is the sequence, huh? The map. The flow is like this. Yes, sir. Okay. Next we have to discuss. So I am just right now telling you the SI unit. Okay, what unit is this? SI unit. Then what will be CGS unit? CGS unit is arc. Joule का क्या हो जाएगा? Arc. तो Newton meter क्या हो जाएगा? 9 centimeter. Okay. In CGS or this is called arc. तो Joule Newton meter होता है. और क्या होता है? 9 centimeter. ठीक है. तो वही है. So what will be relation between Joule and arc? So Newton is 10 raised to 5. Centimeter is 10 raised to 2. 1 meter becomes 10 raised to 2 centimeter. So 1 joule will be equal to 10 raised to 7 arc. ये एक इक्वेशन. ठीक है ना? arc क्या है? 9 सेंटीमीटर. 9 हमने पढ़ा था फोर्स वाले चैप्टर में. पढ़ा था कि नहीं? CGS unit of force is dyne. तो न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन is 10 raised to 5 डाइन. और मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है? 1 मीटर is 100 centimeter. So 10 to the power 2 centimeter. So 10 raised to 5 plus 10 raised to power 2. 10 raised to 7 9 centimeter. Which is 10 raised to 7. All right. It's also given beautifully in the volume. So if you see that, it comes. So now we'll discuss types of work. तुम इसमें और एक चीज ऐड करो. वन 180 डिग्री की वैल्यू से ऐड करो. 180 triangle में एक सिंगल उसका कैसे होगा? हाँ एक सिंगल का 180 कैसे है? देखो इसका 180 कितना हो जाएगा? साइन का 0. इसका क्या होगा? -1. और इसका क्या होगा? साइन थीटा. ये भी 0 है ना. 1/0/-1. एक 180 का भी लिख लो. अभी टाइप्स ऑफ वर्क और triangle में 180 का तो टेंजेंट में triangle में triangle का वैल्यू 180 का है. ये देख लेना 0/-1 कितना होगा? इस मैं बोल triangle में किसी भी एंगल का 180 डिग्री वैल्यू है. अगर 0 तो एकदम कम कर दिया ये, या इसको ऐसे कर दिया. देखो सर्कुलर नहीं,
ये एक हाइपोथेटिकल केस है, कोई क्लॉक वॉल क्लॉक घूम रहा है तो कितना एंगल हो गया इसका? अगर ये साइड में आ गया डायमेट्रिकली ऑपोजिट तो 180 हुआ ना? 180 हुआ कि नहीं? 360 तक जाएगा, उसमें आगे 360 तक जाएगा। अभी ये सब पढ़ने वाले हो तुम लोग। एंगल क्या होगा? 0 to 360, ये सर्कुलर मेजर बोलते हैं इसको, ठीक है? लाइक व्हेन द ऑटोमोबाइल इज मूविंग, व्हील तो घूमते जा रहा है ना, तो 360 1 revolution, 2 revolution, 2 into 360 and 360. Okay, so you'll actually study all this. All right. So अभी tan का जरूरत नहीं है, हमारा डिस्कशन सिर्फ cos थीटा पे, तो सिर्फ ये वाला भी अगर याद है तुमको, वैसे तो आना नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, इसमें डेली में तो नहीं है तुम्हारे को, वॉल्यूम में हमने डाल के रखा हुआ है। डाउट था सर, बोलो। एक व्हील जब रोटेट करता है तो उसका डायरेक्शन, उसका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन, और फ्रिक्शन उसका अपोजिट करता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो फ्रिक्शन सामने की तरफ होगा, तो रुकता क्यों है? हमेशा सामने क्यों नहीं जाता? अगर फ्रिक्शन उसका अपोजिट नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे आगे कर रहा है, तो हमेशा आगे ही जाएगा ना। फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है, स्टेशनरी बॉडी में फ्रिक्शन नहीं लगता है। बात समझ में? अभी समझो एक व्हील रुकी हुई है, रुकी हुई व्हील में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस तरफ। नहीं सर, जब रोटेट कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है तो तो पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन उसके सामने के डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, और सामने जा रहा है, तो रुकना नहीं चाहिए ना। स्पीड कम हो रहा है ना, लेकिन स्पीड क्यों कम? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन ये इस साइड में जा रहा है, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट करना ये है। देखिए, ये इसका फ्रिक्शन की वजह से रुका है। तो फ्रिक्शन तो सामने की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, मोशन किधर हो रहा है इसका? आगे। ये जो कांटेक्ट में ऑलवेज सम पार्ट ऑफ द पेन इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, तो उसको क्या कर रहे हो? वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, उसको इंपीड कर रहा है ना, ब्रेकिंग, इट्स ब्रेकिंग द मोशन। अंडरस्टूड? भले सर्कुलर बॉडी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, लेकिन है। पर सर्कल का तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पीछे की तरह है, तो अपोजिट फ्रिक्शन जो कर रहा है वो सामने की तरफ है। अरे मोशन ये इधर जा रहा है ना, बॉडी किधर जा रहा है? इट वाज इनिशियली एट ए, अब बी पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। तो फ्रिक्शन आगे की तरफ कर रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन आगे जा रहा है। ये जो ये क्या कर रहा है, ग्राउंड पे एसेंट फोर्स लगा रहा है, तो उसका रिएक्शन किधर हो रहा है? ऐसे। ये व्हील आगे रिएक्शन की वजह से आ रहा है, रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, वो क्या बोलते फुल हैं, फुल अभी एक्शन इंसर्ट। हाँ ऑब्वियसली है ना, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ना इस पे, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन इज व्हील पुशिंग द ग्राउंड, reaction is making the wheel move forward and friction is slowing it down. बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, ठीक है? तो ऑलवेज फोर्सेस एक्ट इन पेयर है, फोर्स अकेला नहीं लगता है कभी भी, फोर्स कभी भी अकेला नहीं लगता है। फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? सरफेस, है ना, सरफेस लगा रहा है, तो व्हील का भी एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन हम वो दिखाते नहीं, ठीक है? तो वैसा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो पीछे क्यों नहीं गया? पीछे नहीं गया, रिएक्शन से आ गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क? टाइप्स ऑफ वर्क, फर्स्ट क्या तुम्हारा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन,
हम फोर्स लगा रहे हैं डस्टर पे, डस्टर भी आगे आगे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वर्क के केस में एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर W क्या हो गया इस केस में, Fs cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। ये पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब हम देखते हैं नेगेटिव वर्क। हमेशा तुम्हें याद रखना, वर्क कौन करता है, वर्क कौन कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स। वर्क हमेशा कौन करता है, फोर्स। क्या बेटा ज्यादा हो गया, हैं? दर्द शुरू हो गया, मेहनत करना पड़ेगा, मेंटल। ठीक है, कुछ लोगों को फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है, फुटबॉल क्रिकेट बहुत जोर से ताकत लगा। यहाँ अलग टाइप की ताकत लग रही है ना, यहाँ असर होगा। गुड गुड, दिस इज एक्सरसाइज, होगा थोड़ा थोड़ा। 9 अभी तक तुम लोग कैसे ना, 8 तक क्या था, पढ़ के तो मारूंगी, मम्मी पापा डरा के पढ़ाते थे। अब आगे तुमको कोई डरा के नहीं पढ़ा सकता है, तुमको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी ना, फिर तुम फटाफट इंटरेस्ट इंटरेस्ट पैदा करना होगा। ठीक है, डेफिनेशन दे दी तो फॉर्मूला तो फॉर्मूले से चीजें इजी हो जाती है भाई। याद रखना। तो अभी तुम बताओ, इंग्लिश में 4-5 लाइन लिखना इजी है कि एक इक्वेशन लिखना है? ये ट्रांसफॉर्मेटरी है, धीरे धीरे तुम्हें हैबिट होगी, ये हैबिट बनेगा, यू विल अप्रिशिएट इट, यार ये ठीक है। हाँ, उतना पैराग्राफ लिखने से एक इक्वेशन लिख दिया ना, डिजाइन करना आगे आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा। और तुम इस फॉर्मूले से फिर पैराग्राफ बना सकते हो देख देख के। अभी तुमने देखा, ओके, वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हो गया ना यार, लिख लिया, सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज गिवन एज न्यूटन मीटर ऑफ जूल। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। कुछ नहीं है, ये हैबिट अभी बनेगी ठीक है। और स्कूल में ना टीचर पढ़ाने से ज्यादा डराने का काम करता है, मैंने यही देखा है। और ऐसा करेगा तो मैं खुद डरे रहते हैं, पहले तो खुद के फंडे क्लियर नहीं। सब टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर वैसे नहीं होते, लेकिन जो थोड़े से लेजी होते हैं वो थोड़ा डरा के रखते हैं स्टूडेंट, तो वो नहीं करना। तुम समझो चीजों तो मजा आए। एक क्वेश्चन तूने खुद से कर लिया ना, फिर देख क्या फीलिंग आती है। लेकिन वो करना पड़ेगा खुद से, बाजू वाले को डरा के धमका के नहीं, ले वैसा नहीं। मेरे को वैसे ही 22 साल है तुम दोनों को देख, हाँ, डरा धमका के बाजू वाले से करा लिया अपना क्वेश्चन, ऐसा नहीं करते। एक खुद से करो तो देखो। अब नेगेटिव वर्क कब आएगा इसमें, जब cos थीटा -1 आएगा। cos थीटा -1 किसके लिए आता है, 180 के लिए। समझ में आया? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या लग रहा है, 180। ये कैसे होगा, हाँ? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, मैं फोर्स से लगा रहा तो उधर जाए। तो ऐसा कभी होता है क्या, हाँ, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होता है क्या, तो फोर्स इधर लगा रहा और इधर जा, तभी तो 180 बनेगा ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव आने के लिए cos 180 लेना पड़ेगा मेरे को। मतलब 180 कैसे होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट एंगल लग रहा है 180। ऐसा क्या होता है क्या, होता है? देखो अभी हो रहा है, ये देखो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा वर्क कर रहा है इसमें, नेगेटिव। मैंने जब ये फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं। सेम एक्ट में, सेम सिचुएशन में
मैं जो वर्क कर रहा हूँ पॉजिटिव है और जो फ्रिक्शन वर्क कर रहे हो नेगेटिव। देखो इसको छोड़ा तो ये रुका क्यों? ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझा? जैसे इसको चलाने में मैंने वर्क किया वैसे फ्रिक्शन ने उसको रुकाने में वर्क। बात समझ आई? अभी हम नेगेटिव वर्क कब करते हैं? हम नेगेटिव वर्क कब कर रहे हैं? इसको झटका आया दौड़ के आ गया मेरी तरफ, मैं उसको रुकाऊंगा। मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ? उधर। और इसके साथ साथ मैं भी पीछे घिसट के जा रहा हूँ किधर? इधर। आई एम होल्डिंग हिम इन दिस डायरेक्शन वेयर ही इज डिस्प्लेसिंग मी ओवर हियर। तो फोर्स तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेस किधर हो रहा हूँ? पीछे। हाँ तो रिटार्डिंग फोर्स हो गया ना। तो मेरा वर्क क्या हो गया? आई एम अप्लाइंग द फोर्स एंड आई एम आल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड। हाँ तो नेगेटिव वर्क किसने किया? मैंने इस पे किया कि नहीं किया? मेरा फोर्स इधर लग रहा है लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ आई? मेरी तरफ आई। समझ आया ना? तो ऐसे सो व्हेनेवर यू आर स्टॉपिंग एनीथिंग देन यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क। ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। है ना? फ्रिक्शन क्योंकि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके तो ये हो गया, समझ में आ गया क्या है ऐसा? So in this case, theta is equal to 180 degree, है ना? Between theta किसके बीच में है? F and S. That is F is parallel to S. थीटा किसके किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो W is equal to Fs cos 180. ठीक है? तुमको टेक्स्ट बुक में नेगेटिव वर्क का सेंस नहीं होगा बट है नेगेटिव वर्क। ठीक तो ये हो गया। थर्ड zero work done, no work or zero। नो वर्क या जीरो वर्क कब होगा? इस केस में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। जब cos थीटा मेरा जीरो कब होगा? दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर cos 90 कितना हो गया? जीरो। है ना? तो अगर तुम वर्क का ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, तो वर्क तेरे को कब कब जीरो मिलेगा? कब कब जीरो? या तो cos थीटा जीरो हो जाए, या तो f जीरो हो जाए, या तो s जीरो हो जाए। है ना? फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा। मैं ये दीवार को धक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैंने कितना वर्क किया? जीरो। हमेशा वर्क कौन करता है? फोर्स। मैं फोर्स लगाता हूं ना। वो बात में रुकना, पहले ये तो देख। पहले तीन केस बनेंगे जीरो वर्क में, तीन केस है। फोर्स एक्टिंग बट नो डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस, वर्क जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स जीरो है। ऐसा हो सकता है? Displaced body is moving, but there is no force acting on it. क्या मजा आ रहा है अभी? अब देखो सर सर्कल क्या हो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इसका मैं फ्रिक्शन जीरो करूं इस सरफेस में और उसको मूव करके छोड़ दूं, रुकेगा ये बॉडी? नहीं रुकेगा। मोशन ऑफ द बॉडी ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें फोर्स लगेगा? कोई बॉडी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पॉलिश करेंगे स्पेस में किसी को छोड़ दिया धक्का मार के, फिर क्या होगा? रुकेगा कैसे? अगर किसी ने धक्का नहीं दिया
वो तो खत्म ही हो जाएगा घूमते फिरते। है सिचुएशन ऐसा है कि नहीं? ये है। हम तो ये रेजिस्टेंस कह रहा हूँ सर। हाँ ये रेजिस्टेंस अरे स्पेस बोल रहा हूँ भाई। इसमें तो एयर नहीं है ना, तो एयर रेजिस्टेंस क्यों होगा? नहीं होगा तो एक बार स्पेस क्राफ्ट से बाहर फेंक दिया किसी चीज को, आई वापस। बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स में हम पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं भाई, सिर्फ बॉडी बायो की तरह रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है whenever the motion is taking place on a frictionless surface, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे कब फोर्स जीरो है? अर्थ पे कभी ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस बट फोर्स इज जीरो? नो। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? Let's see. Body tends to get gas. No. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? Body tends to get gas. If it is at rest, Remains at rest. and the body tends to get motion. When it is in motion, it remains in uniform motion. तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब उस पे फोर्स लग रहा है। चल रहा है ना? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, नहीं तो एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन है, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू। तो जब एक्सीलरेशन नहीं तो फोर्स लग रहा है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, फोर्स लग रहा है उस पर, नेट फोर्स जीरो है। अभी जब मैंने जितना फोर्स लगाया है और ये सेम स्पीड पे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा है, मैं सिर्फ फ्रिक्शन ओवरकम कर रहा हूँ, तो इस पे नेट फोर्स है क्या? नहीं है। बहुत तरह से सोचना है, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में अभी इसको हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो। मोशन इज बिकॉज ऑफ नेट फोर्स, याद रखना कभी भी। बट यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, ये चीज। तो ये एक सेकंड केस है, फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉट जीरो। अब एंगल 90, एंगल 90 किसके विषय में? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। एंगल 90 किसके विषय में? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट, एनी ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूसीएम, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हर पॉइंट पे, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर। हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी जब है डिस्प्लेसमेंट की, इसका फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर पॉइंट पे कितना एंगल? 90 है ना। तो अगर वर्क डन करते हैं उस पे, है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती ना, फिर स्पीड तो बढ़ रही, इसीलिए तो स्पीड नहीं बढ़ रही क्योंकि वर्क डन जीरो। सो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। हमेशा व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में ये जीरो। तो ये तो हम बहुत दूर चले गए, अर्थ पे समझाते हो। जो एंगल होता है वो किसके विषय में? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल थीटा किसके बीच में है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही तो है वर्क का डेफिनेशन, और क्या है? थीटा इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब लेट अस से आई कीप अ हेवी लोड ऑन योर हेड, ठीक है, और तुम वॉक कर रहे हो, सर पे लोड लेके वॉक कर रहे हो, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी? और हाउ मच वर्क इज डन बाय यू? सिनेरियो दे रहा हूं तुमको,
ठीक है, वे ये तुम सर पे लेके जा रहे हो, हाउ मच वर्क यू आर डूइंग? क्यों? क्या moving forward and gravitational forces are हाँ समझ आया? तो क्या सर पे बोझा लेके घूम रहे हो तुम, ऐसे जा रहे हो, कितना वर्क कर रहे हो? कुछ नहीं, एज पर साइंस यू नॉट डूइंग एनी ऑफ इट। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। अगर मैं इसका ये ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाऊं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? नीचे कितना लग रहा है? mg। so even when we are walking we are not doing any work for you Yes, because when we are walking, when we are keeping object on our head, तो हम इस पे क्या लगा रहे हैं? रिएक्शन लगा रहे हैं ना। Our force is reaction, the displacement is this, so we are also not doing anything. Physics is very ruthless. तो फोर्स इधर लगा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, वर्क कैसे नहीं? फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है क्या फोर्स? वर्क का क्या कंडीशन है? डिस्प्लेसमेंट टू शुड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? उसमें एक चीज और ऐड करो। क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? what is said to be direct to apply this place since an object Where the displacement must be in the direction of force. जो डेफिनेशन लिखा था ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, उसी में आगे लिखो, एक लाइन ऐड करो, where the displacement must be in the direction of force. सबसे पहले जो आज हमने स्टार्ट किए, पहले डेफिनेशन लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट के आगे फुल स्टॉप लगाओ, उसके आगे लिखो वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो तीसरे केस भी हमने देख लिया, whenever a person keeping a load on his head and walking, तो वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि अगर पर्सन का फोर्स देखें तो वो उसके सर का रिएक्शन ऑन द लोड, फोर्स ऊपर लगा है, पर्सन तो ऊपर ही लगाएगा ना, तभी तो यहाँ पे खड़ा है, नहीं तो क्रश करके नीचे नहीं आता। तो the reaction by our head is holding the load there, वो हमारा फोर्स हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और बाय पर्सन जीरो ही। बट इस केस में when we are walking, is friction doing any work? Yes, फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है। नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क। यस, तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग फोर्स अलग अलग वर्क कर रहा है। तो व्हेन वी आर वॉकिंग विद द लोड ऑन आवर हेड, द फ्रिक्शनल वर्क डन इज नेगेटिव। बात समझ में? तो वैसा है। ठीक है, अब बताओ, आई एम थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट डाउन, how many forces are acting on it and who is doing what work? Just follow the upward motion. जीरो, जीरो वर्क। Upward motion. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अरे upward motion, displacement जीरो के लिए डाउनवर्ड में आना पड़ेगा। Whose work is positive? Mine. Then any negative work from this? ग्रेविटी से gravity Gravity is doing negative. इसलिए तो वहां जाके रुक के इसने डायरेक्शन चेंज। ठीक है? ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क। ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क है ऊपर जाते टाइम। हाँ, फिर नीचे आते समय आते टाइम ग्रेविटी का पॉजिटिव। हमारा है ही। हमारे जीरो वर्क होगा। हमारा नहीं, हमने क्या किया तो टॉस किया। इस टाइम पे हमने पॉजिटिव वर्क किया, जहां पे हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वही टाइम पे ग्रेविटी का ऊपर जाते टाइम नेगेटिव है और नीचे आते टाइम पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग इट।
Alright, so what I want is, you read these two pages. Okay, and go through this table. Read these two pages, whatever I have given, you'll be able to revise. And then go through these examples. Now you should be able to understand. Period करते थे कुछ small plus me पढ़ने की आदत नहीं है आदत नहीं पढ़ने मैं उसको आदत डलवा दूंगा मैं इसको पढ़ने का आदत नहीं पढ़ना पढ़ा करो भाई मजा आएगा एक और बच्चा एब्सेंट है क्या तेरे साथ में और सर मेरी क्लास थोड़ी खाली लग रही है क्लास नहीं लग रही है ठीक है पढ़ लिया एक एग्जांपल का टेबल दिया है वो टेबल पढ़ो जब void लागूंगा पर status में work कैसे होगा अब void लागूंगा पर status में work कैसे होगा boys applying force in lifting his body इसका मतलब status लगा उसको zero displacement आएगा कैसे ऊपर चढ़ रहा है तो कैसे गिरो staircase का तो staircase का तो वो रहेगा ना अरे उसका मोशन किधर है उसका वर्टिकल मोशन so he's lifting his weight to lift his own weight his muscles are applying effort or force in the upward direction weight लगा रहा है तभी तो ऊपर चढ़ रहा है force लगा रहा है कभी ठीक है देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है when you are pulling a bucket of water from the well so you are doing positive work or negative work how positive displacement is in how the negative we are applying force upward and the bucket is also coming upward so we are doing positive work. Gravity is doing negative समझ आया gravity मतलब वेट नीचे लग रहा है gravity की वजह से but bucket is moving up तो ऐसा है read the question carefully ठीक है कि किस कौन से फोर्स का वर्क पूछ रहा है क्वेश्चन सेम सिचुएशन में आंसर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है बात समझ में आ गई यस आ गई ठीक है तो ये with load on his leg. is doing work now There are also is doing more work now lifting his weight plus the load kept on his head up the weight has increased now now if he was alone it's like mother holding a baby now climbing the steps more effort than if it was only mother okay yes okay let's so are you done with 6 examples I'll start with the energy topic in the next class I'll just complete both them by force of gravity so first you go through the examples let me know once done if you need any explanation try to keep the values this my name is
So what is G? Like what is formula for G? Newton meter. Newton meter. But 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Unit. 1 joule is 1 meter Newton force applied to displace object of 1 meter. For 1 meter. This is the formula for work. Yeah. What is unit of work? Just replace the unit. Cos theta is no unit. It is ratio of length. Same quantity by same quantity. No unit. There's no what is the basically what is 1 joule? 1 joule means if you have a body of mass 1 kg and if it is pushed by 1 Newton, Yeah. that is that work done. When you are pushing an object of mass 1 kg, 1 Newton. sorry, 1 when you are pushing the object by a force of 1 Newton by 1 meter, you are applying 1 Newton force and moving this mass to 1 meter. Then whatever work you have done is 1 joule. Okay. Is that clear? Yes. Now let's do work done by gravity. So gravity में दो तरह से वर्क हो सकता है. First is during upward motion. So let us say the object is going up. So let's say it is moving up, right? But where is the gravitational force acting? Okay, this is the motion. Gravitational force down. It is moving up. So angle is 180. So what is the work done? In this case, F S cos 180 minus Fs. Minus. And how much is F? S. F is mg. S becomes h now. You take S is equal to h. Sir, minus MGH. Sir, Yes. sir, okay. Tell me. For example, sir. Example 4. No one. Oh, I explained. No? yeah, I didn't understand. See, when the load is kept on the head, where is the force acting? Downwards. Just not second. On the Fourth, na? Means a boy carrying a load. This is what a boy carrying a load on his head. Will head. So it should not mention him. You can hold a bag like this. एक मिनट उसको समझाना पड़ता है थोड़ा कमजोर. You're not keeping a load on his head. You're just carrying a like a suitcase. तो weight कहाँ जाता है suitcase से नीचे जा रहा है. And now you're walking in front, so you're going ahead. So what is the angle here? Between the force and head. That's why. What is cos 90 0? Okay, समझ? Have you understood now? Yes. Okay, so during upward motion, this is what it is. Now during downward motion. Now our object is here. Now gravitational force is mg and it is now coming down. It is coming down by how much? H.
So in this case, what is W? Fs cos. What is the angle now? F and H in the same direction. Positive. Fs. 0. Here it was 180, right? Then Fs was cos theta. So S is H. What? 0 to 3 move Cos 0 is 1. Okay. Yeah, cos is basically a function, right? Cos is basically a function होता है ना? Cos theta, cos क्या होता है? Function is a relation between LHS and RHS. So function क्या होता है? So basically, work done is a function of angle. ऐसे लिखते हैं. So if theta changes, work will change. This is function. So what? Cos is a ratio. I told you. What is cos? Cos is the ratio. Obviously, ratio of side of triangle. Right. I explained that, right? What is cos? This is the ratio. And that ratio is the function of angle. So therefore, you might be referring to trigonometric function. So cos theta is a trigonometric function in that sense, but it changes due to change of angle. You are going to study that in detail in mathematics, so don't worry. About you? No, sir. Okay, okay, we'll settle it in the next class. मैं भी करता है दिल करना इसमें डाल दे बहुत अच्छी बात है और जी नहीं एक काम करते हैं फिर अपने पैसे से तो अरे फाउंटेन में